Welcome, dear students. Our today's lecture will be based on Einstein's model of specific heat. इसको हम दो lectures में complete करेंगे, one today and one tomorrow. So, in the previous lecture, we talked about the specific heat of solids, and then we talked about a classical theory that tried to explain the specific heat of solids known as Dulong and Petit law. तो हमने देखा कि according to Dulong and Petit law, कोई भी solid substance हो तो उसकी specific heat according to Dulong Petit law must be 24.9 joule per mole per Kelvin. Approximately 25 joule per mole per Kelvin, which is about thrice R, 3 times the universal gas constant. तो उसके बाद हमने एक ग्राफ भी स्टडी किया which plots specific heat of solids versus temperature. तो हमने देखा कि at higher temperatures for certain substances and even at room temperatures for few other substances, the specific heat comes out to be equal to thrice R. लेकिन जो हम low temperature zone में जाते हैं and especially when we approach absolute zero, specific heat constant नहीं रहती है, but it decreases. For insulators, it decreases as cube of temperature, and for metals, it decreases as unit power of temperature. So it does not remain constant. So that is the main drawback of Dulong-Petit law. तो उस Dulong-Petit law को what I mean to say, उसकी जो drawbacks हैं उन पे वर्कआउट करने के लिए, उनको दूर करने के लिए Einstein came up with a model. So let us study Einstein's model today. तो सबसे पहले हम इसके assumptions देखेंगे. The basic difference between Dulong-Petit law and Einstein's model is कि Einstein model में quantum concept use होता है. The first assumption of Einstein's model is that each atom in the lattice is an identical and independent three-dimensional quantum harmonic oscillator. So, because of the thermal agitation, हर कोई atom lattice में about its equilibrium position oscillate करेगा. Now it is free to oscillate about x-axis. So an atom is equivalent to one-dimensional oscillator. अच्छा, यही atom जो है, it can oscillate along y-axis. The same atom is equivalent to another one-dimensional oscillator, and the same atom can oscillate along the third dimension, z-axis. So the same atom is equivalent to one more one-dimensional oscillator. तो इसका मतलब ये हुआ कि one atom is equivalent to 3 one-dimensional oscillators. और इस assumption में ये भी कहा गया है कि atom is quantum harmonic oscillator. तो quantum it stands for quantization of energy. Classical theory में ये assumption थी कि the atomic oscillators can have any energy ranging from 0 to infinity. तो यहाँ पे main difference ये है कि यहाँ पे quantization of energy का concept है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे. अच्छा, the atomic oscillators are distinguishable or identifiable. अच्छा, अगर सारे atoms एक जैसे हैं तो हम इनको distinguish या identify कैसे कर सकेंगे? According to their respective locations in the lattice. सारे के सारे atoms जो हैं, they oscillate with the same frequency, जिसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी या आइंस्टाइन्स फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. अच्छा, इसका लॉजिक आइंस्टाइन क्या देता है कि देयर इज आइडेंटिकल एनवायरनमेंट ऑफ ईच एटम.
तो दिस इज द फॉल्टी assumption इन आइंस्टाइन्स मॉडल। बाद में हम देखते हैं कि हर कोई एटम एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट नहीं करता है। सो दिस इज द फॉल्टी assumption इन आइंस्टाइन्स मॉडल। Any number of atomic oscillators can be in the same quantum state. That means कि जो atomic oscillators हैं, they obey Maxwell-Boltzmann statistics or the distribution law. अच्छा, अगर एक solid it consists of n atoms और एक atom equivalent है 3 वन डायमेंशनल ऑसिलेटर्स के, तो अगर एक सॉलिड में टोटल में n एटम्स हैं, देन इट इज इक्विवेलेंट टू 3n वन डायमेंशनल ऑसिलेटर्स। और चूंकि हम यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, तो in place of n atoms we will take Na atoms, because 1 mole contains 6.022 into 10 raised to power 23 atoms, which is the Avogadro's number denoted by Na. This is the quantum concept कि एक atomic oscillator can have energy given by n times h nu, where nu is frequency of the oscillation, h is Planck's constant, and n is an integer called quantum number. तो या तो एक atomic oscillator की energy होगी 0 या होगी 1 h nu। तो 0 और h nu के बीच में जितने भी energy values हैं, they are not allowed. इसी तरह या तो फिर 1 h nu के बाद 2 h nu and so on. So 1 h nu और 2 h nu के बीच में जितने भी energy values हैं, they are not allowed. So that means the energy spectrum is discrete in opposition to the classical concept. So this is the quantum concept. So let us start the derivation. So we will start with the Boltzmann formula. What is the probability कि एक atom, एक atomic oscillator possesses energy nh nu? This is given by Boltzmann formula. Numerator में है e raised to power minus n h nu by kt, और डिनोमिनेटर में इसी फैक्टर को किया गया है सम ओवर ऑल द मोड्स ऑफ ऑसिलेशन. सो दिस गिव्स द प्रोबेबिलिटी. अब हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी possessed by an atomic oscillator, because कुछ atomic oscillators ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी होगी h nu, कुछ की होगी 2 h nu, कुछ की होगी thrice h nu, कुछ की होगी 4 times h nu and so on. तो हम यहाँ पे इसका एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं कि ऑन द एवरेज व्हाट इज द एनर्जी possessed by an atomic oscillator. So we want to determine average value of energy possessed by the atomic oscillators. So we have to multiply this probability with the energy nh nu, and we have to take sum over all the modes of oscillation. So the average value will be given by the expression. Average value को हम E bar से denote करेंगे, probability को हम energy का value multiply करेंगे En, and then we will sum over all the modes of oscillation. चलिए हम यहाँ पे पहुंचते हैं. इसके बाद हम we will start giving values to n from 0 to infinity. अच्छा, अगर हम न्यूमरेटर में n का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें, the whole term will become 0. तो न्यूमरेटर में पहली टर्म 0 बनेगी. What about denominator? जब हम डिनोमिनेटर में n का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, we will get a raised to power 0, that is 1. तो न्यूमरेटर में पहली टर्म 0 बनेगी और डिनोमिनेटर में पहली टर्म 1 बनेगी. व्हाट अबाउट द सेकंड टर्म? n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस विल बिकम h nu टाइम्स e raised to power minus h nu by kt, और डिनोमिनेटर में होगा e raised to power minus h nu by kt. फिर n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे,
तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगी टर्म ट्वाइस एच न्यू ए रेज टू पावर माइनस ट्वाइस एच न्यू बाई के टी, डिनोमिनेटर में मिलेगी ए रेज टू पावर माइनस 2 एच न्यू बाई के टी एंड सो ऑन. So this is what we will get. This gives expression for average energy of an atomic oscillator. तो इसका वैल्यू इवॉल्वेट करने के लिए हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. We will put e raised to power minus h nu by kt equal to x. तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स. अच्छा, उसके बाद जो तीसरी टर्म है e रेज टू पावर माइनस 2 एच न्यू बाई के टी, इसमें e रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी तो x है, फिर पावर 2 रह जाता है, तो दैट मीन्स वी विल गेट एक्स स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे एक्स क्यूब, और न्यूमरेटर में एच न्यू टाइम्स एक्स प्लस ट्वाइस एच न्यू एक्स स्क्वायर plus thrice h nu x cube and so on. So we will get this expression. तो न्यूमरेटर में हम h nu कॉमन आउट कर सकते हैं. So when we will take h nu common out in numerator, तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा x plus twice x square plus thrice x cube and so on. तो इसको हम we will put this equal to s. इसी तरह डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन. तो we will put all this equal to d. So हमें इक्वेशन नंबर 4 मिलती है कि एवरेज एनर्जी of an atomic oscillator equals h nu times s divided by d. Now our job is to evaluate the values of s and d. तो सबसे पहले हम d का वैल्यू evaluate करेंगे, which is very easy for us because d is an infinite geometric progression. इसका पहला जो एलिमेंट है, पहली टर्म, दैट इज यूनिटी, दैट इज 1. उसके बाद हम कॉमन रेशो देखें. कॉमन रेशो मींस द रेशो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स. तो x डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स x. जरा हम दूसरी और तीसरी टर्म का रेशो लिखें. सो x स्क्वायर बाय x, दैट इज अगेन x. x cube by x square, that is again x. So this is an infinite geometric progression जिसका पहला एलिमेंट, पहली टर्म है 1 और कॉमन रेशो है x. तो इसका अगर हमने सम अप टू इन्फिनिटी देखना है, दैट इज गिवन बाय द रेशो. न्यूमरेटर में हम लिखते हैं पहला एलिमेंट और डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं 1 माइनस कॉमन रेशो. सो the sum up to infinity d equals first term divide में हम करेंगे 1 minus common ratio. The first term equals 1, then divided by 1 minus common ratio, that is x. So we are done with d. So we have evaluated the value of d. Now our next job is we have to evaluate the value of s. s को हम इस तरह इवॉल्वेट नहीं कर सकते हैं, इसको हमें थोड़ा बहुत और सिंपलीफाई करना पड़ेगा बिकॉज s is not a geometric progression as such. So let us try to evaluate the value of s. So s is given by this. इसको इवॉल्वेट करने के लिए we will multiply this equation by x on both sides. तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलेगा x टाइम्स s और राइट हैंड साइड पे हर जगह x का पावर एक इंक्रीज होगा. इट विल गेट इंक्रीमेंटेड बाय 1 each in each term. So we will get x times s equals x square plus twice x cube plus thrice x raised to power 4 and so on. हम अब इक्वेशन नंबर 6 और 7 से एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं. कैसे?
अगर हम इक्वेशन नंबर 6 से इक्वेशन नंबर 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो राइट हैंड साइड पे देखें, इक्वेशन नंबर 6 में है x, इक्वेशन नंबर 7 में कहीं x है ही नहीं, सो वी विल गेट x। अगर हम इक्वेशन नंबर 6 से 7 को सब्ट्रैक्ट करना शुरू करें तो इक्वेशन नंबर 6 में है ट्वाइस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7 में एक्स स्क्वायर, सो वी विल बी लेफ्ट विद ओनली 1 एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 6 में है थ्राइस एक्स क्यूब, इसको सब्ट्रैक्ट होगा 2x क्यूब, सो वी विल बी लेफ्ट विद ओनली 1x क्यूब। एंड सिमिलरली फॉर the higher powers of x, so that means we have to subtract equation number 7 from 6। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, we will get s minus x times s, और राइट हैंड साइड पे we will get this infinite geometric progression, x plus x square plus x cube plus x raised to power 4 and so on. Now again we have got an infinite geometric progression जिसकी पहली टर्म है x, the first element is x and the common ratio is again x। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें था s माइनस एक्स एस, यहाँ पे हम s को कॉमन आउट कर लें तो we will get s times 1 minus x। अच्छा, राइट हैंड साइड इज अगेन एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका पहला एलिमेंट है x, कॉमन रेशो भी है x, तो इट विल बी गिवन बाय द रेशो न्यूमरेटर में पहली टर्म विच इज x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो 1 माइनस x। तो s के साथ मल्टीपल है 1 माइनस x, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चलाया जाएगा और 1 माइनस x का पावर 2 आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी इवालुएट द वैल्यू ऑफ s। तो हमें अब s का वैल्यू भी मिला और हमें d का वैल्यू भी मिला, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 4 में वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। Our equation number 4 was E bar, the average value of atomic oscillator equals h nu times s divided by d। तो इसमें हम s का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और d का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें आप, दिस इज 1 माइनस एक्स, यहाँ पे है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक पावर कैंसिल होगा तो वी आर लेफ्ट विद x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, और इसके साथ मल्टीपल में h न्यू तो है। अब याद करें कि हमने x किसके बराबर रखा था, वी हैड पुट x इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस h न्यू बाई kt, तो उसका वैल्यू हम वापस इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करने के लिए we will multiply numerator as well as denominator by e raised to power h nu by kt with the same power of exponential function but with a positive sign। So हम न्यूमरेटर को e raised to power h nu by kt से मल्टीप्लाई करेंगे, the bases are same, powers are added, we will get e raised to power 0, that is 1। सो न्यूमरेटर में खाली बचेगा h न्यू। डिनोमिनेटर में जाएं तो पहली टर्म है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे e रेज टू पावर h न्यू बाई kt, सो वी विल गेट e रेज टू पावर h न्यू बाई kt। फिर है माइनस, फिर e रेज टू पावर h न्यू बाई kt विल गेट मल्टीप्लाइड टू e रेज टू पावर माइनस h न्यू बाई kt, सो e रेज टू पावर 0 बनेगा बिकॉज बेसिस आर सेम, पावर्स हैव टू बी एडेड, तो e raised to power 0 banega, that is 1। So this is it. So we will get equation number 9। Equation number 9 gives the average value of an atomic oscillator, right? So we have got expression for average energy of an atomic oscillator in Einstein's model।
Now we will consider 1 mole of such atomic oscillators. तो पहले हम इसका ग्राफ देख लें. This is the graph of average energy of an atomic oscillator versus temperature. Classical value is kT. So that is a linear equation. So the graph of classical expression is this dashed line. But the value given by Einstein's model is h nu divided by e raised to power h nu by kt minus 1, which is a decreasing exponential because exponential function denominator mein hai. So this is the variation of E bar with respect to temperature in Einstein's model. अलबत्ता हाँ, अगर हम high temperature values पे जाएं तो T का वैल्यू काफी ज्यादा है, which is in denominator for exponential function. तो e raised to power h nu by kt उसको हम approximate कर सकते हैं 1 plus h nu by kt. तो उसका वैल्यू यहाँ पे substitute करेंगे, 1 and 1 will go, h nu and h nu will get cancelled, we get kt. So at higher values, the quantum value and classical value for average energy of an atomic oscillator, they match, they agree. Chaliye, now we got expression for average energy of one atomic oscillator, and since एक atomic oscillator बराबर है 3 one dimension oscillator के, तो एक मोल में ऐसे ऐसे n a atoms हैं. So the total energy will be thrice n a e bar. E bar is energy of one atomic oscillator, but that is equivalent to 3 one-dimensional oscillators. That is why the term 3 is here. और एक मोल में ऐसे ऐसे Na atoms हैं. So we get this value of total energy for 1 mole of solid. तो इसको हम differentiate करेंगे with respect to temperature, तो we will get specific heat. तो thrice Na h nu, that is a constant, so that will get out of the differentiation. जो डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको हम न्यूमरेटर में लाएंगे, तो इसका जो पावर +1 है न्यूमरेटर में -1 हो जाएगा. तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है. राइट, सो द नेक्स्ट टर्म विल बी थ्राइस NaH न्यू इनटू एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन. तो इसका जो पावर -1 है वो नीचे आ जाएगा और इसका एक पावर और कम हो जाएगा. सो -1 अगेन -1, दैट विल बिकम -2. फिर हमें इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन करनी है, तो वी विल डिफरेंशिएट e raised to power h nu by kt minus 1. सो इन द नेक्स्ट सेटअप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन वापस आती है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन -1 की डिफरेंशिएशन आएगी 0. सो d by dt of exponential function -1 will be exponential function of h nu by kt. Then we have to differentiate this h nu by kt, which is here. अच्छा, इसको differentiate करने के लिए h nu by kt ये तो constant है, so it will get out of it. और जो denominator में t है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो t का पावर बनेगा -1. अच्छा, t raised to power -1 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? इसका जो -1 है पावर वो नीचे आएगा और t का एक और पावर कम हो जाएगा, तो t का पावर बनेगा -2. सो दैट इज इट. तो -1 and -1 will get cancelled. इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलती है. h nu 2 बार आ रहा है,
अच्छा, डिनोमिनेटर में t का वैल्यू भी 2 है, ऊपर h न्यू का पावर भी 2 आएगा, तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे, ताकि डिनोमिनेटर में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू भी स्क्वायर आए। अच्छा, द प्रोडक्ट Avogadro's number into Boltzmann constant, that is the universal gas constant. So we will get thrice R. और यहाँ पे h न्यू डिवाइडेड बाई के टी पावर टोटल में 2 आएगा। सो इक्वेशन नंबर 12 is the general expression for specific heat in Einstein's model. And obviously इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो जब हम लो टेम्परेचर जोन की बात करेंगे तो the specific heat will decrease exponentially with respect to temperature in Einstein's model. So equation 12 gives the general expression for specific heat in Einstein's model. यहाँ पे हम दो quantities define करेंगे. Number one is Einstein's temperature and number two is Einstein's frequency. तो Einstein's characteristic temperature, it is a temperature which is characteristic of a substance and it appears in Einstein's equation for specific heat. तो इसको define करने का तरीका ये है कि एक साइड में हम एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो दैट विल बी h times frequency, and we will put this equal to Boltzmann constant times temperature, so that temperature will be Einstein's temperature, जिसको हम थीटा with a subscript e से डिनोट करते हैं, यानी कि we put h new times Boltzmann constant times Einstein temperature. तो यहां से हमें Einstein's टेम्परेचर थीटा ई के लिए एक्सप्रेशन मिलती है, चूंकि Einstein's टेम्परेचर को मल्टीपल में है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसको हम यहां पे ले जाएंगे दूसरे साइड पे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह हम Einstein टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं कि it is equal to the product of Planck's constant and Einstein's frequency, h nu, then divided by Boltzmann constant. तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 12 में यूज करें, चूंकि that was h nu by kt, तो h nu by k will be equal to Einstein's temperature, सो थीटा ई और डिवीजन में रह जाता है टी। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर भी बनेगा थीटा ई बाई टी और डिनोमिनेटर में भी। तो इस एक्सप्रेशन में विच इज अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड, इट इक्वल्स थ्राइस आर times this function and this function is called Einstein's function. यहाँ पे हमने Einstein's function को पुट किया है equal to this whole thing, जो कि इस जनरल एक्सप्रेशन में थ्राइस आर को मल्टीपल में। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? थ्राइस आर इज द क्लासिकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, सो इसको मल्टीपल में जो कुछ भी है दैट इज कॉल्ड Einstein's फंक्शन। तो Einstein's फंक्शन इज बेसिकली दिस थिंग, और ये हमें मिलेगा अगर हम स्पेसिफिक हीट को डिवाइड करेंगे थ्राइस आर। Welcome dear students, this is our second lecture on the Einstein's model. So in the previous lecture we derived a general expression for specific heat according to Einstein. तो आज हम देखेंगे कि we will consider two special cases कि in the high temperature limit
आइंस्टाइन मॉडल की क्या शेप बनेगी, इन द लो टेम्परेचर लिमिट इसकी क्या शेप बनेगी. Then we will draw a graph of Einstein's model, and we will compare the graph of Einstein model with the experimentally determined values. And then we shall talk about drawbacks of Einstein's model, and we will explain those drawbacks. So let us start. This is the general expression for specific heat as per the Einstein's model. तो इसमें हम क्या करेंगे कि we will इसमें हम जो ये h nu by Boltzmann constant है, we will put this equal to Einstein's temperature, which we will denote with theta E. So let us do that. We define Einstein's temperature as the product of Planck's constant and Einstein's frequency divided by the Boltzmann constant. तो एक्चुअली हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस करते हैं. सो दैट मीन्स h टाइम्स न्यू, which is the quantum concept. और दूसरे साइड में हम इसी एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर एक्सप्रेस करते हैं. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, which is the classical concept. तो यहां से हमें आइंस्टाइन टेम्परेचर के लिए एक्सप्रेशन मिलती है दिस h nu by k, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो इसको हम इसको हम यूज करेंगे इन इक्वेशन नंबर 12. So let us see what we will get. So then our equation number 12 becomes 3r, और चूंकि यहाँ पे this was h nu by k, तो this is theta e, so इसको डिवाइड हो जाएगा टेम्परेचर t. तो इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर वी विल गेट थीटा e by t. अच्छा, जो ये हमें 3r के बाद जो कुछ मिलता है, we will put that equal to a function what we will call Einstein's function. This f(e) of theta by t, it's a function which depends upon both Einstein's temperature and the temperature of the solid. So we call this Einstein's function. This is our Einstein's function. This is our Einstein's function. तो ये हमें फिर मिलता है बराबर as the ratio of specific heat divided by 3r. Now what is this 3r? 3r is the classical value of specific heat. So the physical significance of this equation is that this Einstein's function is the ratio of specific heat at some temperature T to the classical value thrice R given by Dulong-Petitla. Now let's go to the high temperature behavior. This is the formula. This is the general formula for specific heat at a temperature T given by Einstein's model. तो इसमें हम पहले देखेंगे high temperature limit. So when T is very very large, T tends to infinity. तो उस वक्त अगर हम h nu और kt को compare करना चाहें, since T has got very large value, so kt will be greater than h nu, rather very very much greater than h nu.
तो उस वक्त अगर हम रेशो निकालना चाहें एच न्यू बाई के टी, सिंस डिनोमिनेटर का वैल्यू बहुत ज्यादा है, सो the whole term h nu by kt will tend to 0. Since this h nu by kt appears here in the exponential, it appears here in the exponential, so when the power is very very small, that means exponential also tends to 0. So this tends to 0. इसी तरह जो डिनोमिनेटर में है e raised to power h nu by kt, it also tends to 0. Now when the exponential function tends to 0, we can approximate it as 1 plus power of the exponential function. So e raised to power something, if that power is very very small, then we can approximate exponential function. We can approximate this exponential function as 1 plus the power of the exponential function, right? तो अब हम ये जो approximation है which we can do at very low enough temperature, इसको हम यहाँ पे we will use this in equation number 12. यानी denominator में जो है वहां पे हम e raised to power h nu by kt की जगह लिखेंगे 1 plus h nu by kt, और इसी तरह जो न्यूमरेटर में है देयर इसकी जगह भी हम लिखेंगे 1 plus h nu by kt. So let us do that. तो डिनोमिनेटर में 1 plus h nu by kt तो है, लेकिन इसके साथ एक -1 यहाँ पे भी है, so this will cancel this -1, so 1 and -1 will go, so we are left with h nu by kt. अच्छा, डिनोमिनेटर में h nu by kt का स्क्वायर है, this will cancel with this h nu by kt square, so we are only left with thrice r times this 1 plus h nu by kt. So that will be our next step. अच्छा, यहाँ पे हम फिर approximation यूज करेंगे, since the T is very large, the temperature is tending to infinity, so that means this whole value h nu by kt can tend to 0. So we can neglect this term in this expression. So this term tends to 0, so we can approximate that CV equals simply thrice r. So at high temperature, Einstein's model gives specific heat equal to thrice r, which is the same as given by Dulong-Petit law. So then we can have the physical significance that at high temperatures, Einstein's model for molar specific heat reduces to the classical Dulong-Petit law. So at high temperatures, Einstein model matches with Dulong-Petit law. Now let us check the behavior of Einstein's model at low temperatures. We will again start with the general expression for molar specific heat given by the Einstein's model. Now we shall consider low temperature zone. So now T tends to 0. Now when T tends to 0, लो टेम्परेचर जोन, तो अब अगर हम एच न्यू और kt को कंपेयर करें, सिंस t has got very small values tending to 0, so kt will be very very small as compared to h न्यू. फिर से हम इनका रेशो लेंगे, so h न्यू by kt, since denominator is very very small, तो ओवरऑल जो न्यूमरेटर का ओवरऑल जो इस फंक्शन का वैल्यू होगा, that will be very very large. And consequently, since this h nu by kt appears as the power of exponential function, so the value of exponential function will be also very large. तो अगर हम इस exponential function का value और इस 1 को consider करें, then we can neglect this -1. We can neglect this one as compared to the exponential function, because जो exponential function है, it will be having very large value as compared to unity. So we will neglect this in equation number 12.
So let us see what we will get. तो हमने डिनोमिनेटर में वो -1 नेग्लेक्ट किया. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल का पावर 2 है और ऊपर इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल होगा इसके साथ. सो वी विल गेट an exponential function in the denominator. इसको हम ऊपर ले जाएंगे. If we will take it into the numerator, तो इसका जो पावर है वो माइनस बनेगा. So this is what we get expression for specific heat in the low temperature zone as given by Einstein's formula. So at low temperatures, Einstein's model predicts an exponential decrease because we have got a function, exponential function with power -1. So at low temperatures, Einstein's model predicts an exponential decrease. लेकिन जब इसको हम compare करते हैं with the experimentally determined values, तो उसका ग्राफ हम आगे जाके देखेंगे. तो Einstein's model gives us predicts values which are smaller than the experimentally determined values. So that is the drawback of Einstein's model. अच्छा, reason क्या है? Why Einstein's model gives us values of specific heats at low temperatures which are smaller than the experimentally determined values. तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि आइंस्टाइन मॉडल के जो एक अजम्पशन है उनमें से एक मैंने कहा था कि ये फॉल्टी अजम्पशन है कि all the atoms, all the atomic oscillators oscillate with the same natural frequency. तो जो in actual practice atomic oscillators oscillate with different frequencies. तो हम सिर्फ एक ही frequency का contribution लेते हैं, बाकी frequencies जो हैं उनके contribution को हम add ही नहीं करते. तो because of that कि हमारा जो मोलर स्पेसिफिक हीट में वैल्यू है वो थोड़ा सा कम मिलता है हमें, बिकॉज वी टॉक ऑफ वी सी कंट्रीब्यूशन ड्यू टू ओनली अ सिंगल फ्रीक्वेंसीज. बाकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन हम ऐड ही नहीं करते. दैट्स व्हाई वी गेट अ स्मॉलर वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट. दिस इज द graph of specific heat versus temperature for metal copper. This is the metal copper and इसमें जो आप solid curve देखते हैं that denotes the theoretical prediction according to Einstein's model. लेकिन इसमें जो आप ये dots देखते हैं, this is one dot, this is another dot, this is another dot. Those dots represent the experimentally determined values. Those dots represent the experimentally determined values. So as you can see, when the temperature is high or at least room temperature like 300 Kelvin, so Einstein model जो है it agrees with the experimentally determined values over a large temperature range. लेकिन जूं हम इस रेंज में जाते हैं, जूं we go to the low temperature range, this range you can see कि Einstein model जो theoretical prediction हमें देता है उसके values थोड़े से कम होते हैं, little bit low as compared to the experimentally determined values like this. So it fails. पहले तो हम कहेंगे कि Einstein model succeeds. It explains very nicely specific heat in the high temperature range and room temperature range, but it fails in the low temperature range. जहाँ पे Einstein model it gives lower values of specific heat than experimentally determined.